ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा फेमस डिमांड पे था कि 2018 के पेपर को पकड़ के मैं एनालाइज करूं और बताऊं कि 2018 पेपर हाउ इट हैज़ टू बी सॉल्व. व्हाट आई हैव फर्स्ट ऑफ ऑल डन इज आई हैव नॉट टेकन दी ऑफलाइन. इनफैक्ट मैंने अब की बार ऑनलाइन पेपर लिया है. राइट, ऑनलाइन पेपर वो भी कौन सा लिया मैंने, जो 16 अप्रैल को हुआ था, विच आई कंसिडर्ड वॉज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग वंस इन दी 2018. ओके, सो जिससे आपको समझ में आएगी मोस्ट चैलेंजिंग पेपर से भी नंबर कैसे बनाए जाते हैं. अगेन एज द पार्ट ऑफ अजम्पशंस व्हाट वी गाइस आर डूइंग कि जो डिफिकल्टी लेवल में बार बार वर्ड यूज करूंगा क्वेश्चन में, सो डिफिकल्टी मे वेरी अकॉर्डिंगली. राइट, डिफिकल्टी जरूरी नहीं है सबकी सेम हो. सो डिफिकल्टी इज अकॉर्डिंग टू मी, आई एम सेइंग इज अकॉर्डिंग टू मी, राइट, but it may vary from teacher to teacher, from student to student, from their preparation to preparation. So please be very इस लिहाज से थोड़ा आप lenient रहें, ठीक है. और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें करने की कि यार जल्दी से जल्दी हमें नंबर कैसे बनाने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फॉलो द सिक्वेंशियल ऑर्डर. वाई एम गोइंग टू फॉलो द सिक्वेंशियल ऑर्डर, मैं आगे पीछे नहीं भागूंगा. क्यों? क्योंकि पेपर है ऑनलाइन. ऑनलाइन में बेटर है कि आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलें और उसको मार्क फॉर रिव्यू वाली जो स्ट्रैटेजी है उसमें डालते रहें, तब सीक्वेंशियल ऑर्डर का चलने का बड़ा फायदा होगा, ठीक है. और इसमें मैंने जो प्रिपरेशन की बात अगर मैं करता हूं तो प्रिपरेशन में मैंने कई स्टैंडर्ड चीज़ें एज्यूम कर रहा हूं जो मैंने पिछले साल के पेपर्स में भी करी थी. स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि यार अगर आप मुझे बोलते हैं सर मैंने वेक्टर 3D नहीं करा है, तो यार ये मैं कुछ नहीं हेल्प कर पाऊंगा इसमें. आप कहते हैं सर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं प्रिपेयर करा है, तब थोड़ी प्रॉब्लम होगी. बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपने सब कुछ नहीं करा है तो आपके नंबर नहीं बनेंगे. आप पूरा आराम से इस एनालिसिस को देखो, तब आपको पता चलेगा कि यार मैं टारगेट रख रहा था 40 मार्क्स. राइट, 40 मार्क्स तो कुछ भी नहीं होता है. 60 नंबर बड़े आराम से बनाए जाते हैं, 60 मार्क्स. राइट, दूसरा, बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं हमेशा, कई कई बार हमारे, ठीक है, उनको ये याद रहे ये 1 hour 30 minutes का वीडियो है. राइट, और 1 hour 30 minutes का मतलब ये नहीं है कि मेरे को 1.5 घंटा लगा है पेपर सॉल्व करने में. और बच्चे कई कई बोलते हैं कि सर 1.5 घंटा तो यहाँ लग रहा है, पेपर में कैसे होगा. अरे भैया, यहाँ समझाया गया है. दैट राइट, वी आर एक्चुअली नाउ टीचिंग यू not concept which nobody on YouTube or even in the classroom does. टीचिंग क्या होती है जनरली, आपको हर कोई बंदा टीचिंग क्या कराता है, कॉन्सेप्चुअल. राइट, here what we guys are trying to do is we have tried to teach you how to solve, which is the most important element, how to solve a paper. हाउ टू सॉल्व अ पेपर, आपका दिमाग में क्या चलना चाहिए. तो मैं दोनों सोचो, आई एम इन दिस 1.5 hour आई हैव डन ऑल दी थिंग्स, आई हैव डन दी सॉल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन ऑलमोस्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो टेल यू हाउ यू शुड थिंक, विच क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट, दिमाग में क्या आना चाहिए, सारा काम करे. तो उस लिहाज से अगर देखोगे तो ये बहुत जस्टिफाइड 1.5 hour होगा. एंड आई एम एश्योरिंग यू कि ये हो सकता है आपके लास्ट के दिनों के सबसे इंपॉर्टेंट 1 hour 30 minutes होंगे जो आप शायद किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दोगे. ठीक है जी, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं इनटू 2018 एग्जामिनेशन. Alright students, so let us start the process of analyzing 2018, the process as I have told in the description earlier. So we start in a sequential order, जबकि sequential में नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है, but फिर भी we are going to start in the sequential order, assuming that we got a paper which is offline. तो पहला है 61, ठीक है. देखते ही समझ में आ रहा है कुछ रेंज, सिमेट्रिक. सो व्हाट आर द टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड. आप कई के बार डिटेक्ट कैसे करोगी, मैं पढ़ पाऊंगा क्वेश्चन, रेंज पूछा जा रहा है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. So as I have told you that you should actually have done range and symmetric kind of questions to make sure that you are really good at them. ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आई वुड से आई वुड अटेम्प्ट राइट इन दी क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ. सो लेट्स सी, इट सेज n इज बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. थोड़ा बहुत समझाते भी जाएंगे कि क्या क्या होता है जिससे लर्निंग भी हो हमें. नेचुरल नंबर्स एंड r1 इज अ रिलेशन. राइट, r1 is 2x plus y is equal to 10 and r2 is another relation which is given by x plus 2y is equal to 10. Now the first two options are asking about range. Range can only be figured about when you write y, right? Y is the range, right? 10 minus 2x and this y will be 10 minus x by 2, right? These are the two values of y. Now note, important is both y and n
belong to natural numbers. That means they cannot be fractional. So अगर मुझे यहाँ पर अब काम करना शुरू करते हैं, अब मुझे रेंज निकालनी है, ठीक है. रेंज इस क्वेश्चन की क्या होगा? द वैल्यूज विच दी y कैन टेक. वेरी वेरी सिंपल. स्टार्ट पुटिंग x इक्वल टू 1. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज x कहाँ से शुरू होगा? 1 से, बिकॉज नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, जल्दी से करते हैं. तो x की y की वैल्यू क्या आ गई? 8, वो लिखी हुई है. x की वैल्यू 2 डालता हूँ और y की वैल्यू कितनी आएगी फिर हमारे पास? 6. नोटिस करो ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर ऑप्शन गलत हो गया. आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. चलिए रेंज हम बात करते हैं इस वाले फंक्शन की. रेंज के लिए अगर मैं x को यहाँ पर 1 डालता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? y comes out to be 9/2, which is not possible. That means I cannot have domain x equal to 1 in this question. क्यों? अदरवाइज y will not be a natural number. चलिए x को 2 डालते हैं, इसका मतलब इवन नंबर्स डाल डाल के ट्राई करेंगे. तो 2 डालते हो तो क्या आ रही है? y की वैल्यू 4. सिमिलरली इफ यू पुट x इक्वल टू 4, y इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? आप 4 डालोगे, अब की बार क्या आएगा? 3 वैल्यू आएगा. x को हम 6 डालते हैं तो y की वैल्यू देखो क्या आ रही है? 2 आ रही है. x को मैं 8 डालता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1. आई कैन नॉट पुट x इक्वल टू 10 बिकॉज y क्या आएगा उस पर? 0. 0 is not a natural number, it's a whole number. So if you notice, that means this become the range. लो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. So that means this is the range. और रेंज क्या आ रही है? 1 2 3 4, isn't it? रेंज कितनी आ रही है तुम्हारी? 1 2 3 4. आंसर ऑप्शन पढ़ो सेकंड. रेंज भी कितनी दे रखी है? 1 2 3 4. क्वेश्चन ओवर. 4 नंबर मिलने शुरू हो गए. मैं इसको सीधा सीधा जाता और मार्क करके आता क्वेश्चन में. Please start thinking like this. Questions which are very very important, basic, you should actually do them. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो कैलकुलेट करते चलते हैं. अभी हमारा स्कोर कितना हो गया? +4 मान के चल रहे हैं कि हमने +4 कर लिया है. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 62. 62 देखने में ही थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, पर घबराने की बात नहीं है. कभी भी लेंदी लगने से क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए. लेट्स स्टार्ट इट. इट सेज PQR be real numbers such that the roots of the equation. So let's start doing this question. It says 1 by x plus p by 1 plus x plus q is equal to 1 by r. ठीक है, इसमें रूट्स क्या दिए हैं? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ो. मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. तो अगर कुछ ऐसी चीज दे दी है तो इससे क्वेश्चन इजी बन गया आप लोगों का. क्यों? बिकॉज ये आपको पता है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा. बिकॉज मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट उसमें तो जब ऐसा कुछ दे दिया जाए तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? सम ऑफ रूट्स. क्योंकि सम ऑफ रूट्स इस बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो इंटेंडेड पर्पस ये था. देन आपसे पूछा क्या जा रहा है? एक्चुअल में सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स. सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर. सो ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी. क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा था. देखा जाए तो क्वेश्चन अब ज्यादा टफ रहा नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सॉल्व करना था? क्वाड्रेटिक बनानी थी. अगर क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते तो हम बहुत जल्दी इसमें क्वाड्रेटिक बना सकते थे. ऐसा नहीं है कि इसमें क्वाड्रेटिक बनाने में बहुत टाइम लगेगा. सो इफ यू आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट गेटिंग सम गुड मार्क्स, लेट्स से अबव 50 और 60, देन यू शुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर श्योर. बहुत आसान है. क्यों? देखो अब जल्दी से देखो. एक्स स्क्वायर की टर्म आई वहां पर, राइट. अगली टर्म क्या आएगी? एक्स की क्या टर्म आ रही है? p प्लस क्यू. और यहां से क्या आ रही है? माइनस 2r आ रही है. देखते हैं. एकदम से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी हमें. ये हमने सीखा है. ठीक है. और एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म दैट यू आर गेटिंग हियर? ओके, लेट्स जस्ट बी ऑन द सेम पेन. सो ये क्या बन गया? प्लस देखो pq एंड द अदर टर्म दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द अदर साइड इज p प्लस क्यू टाइम्स r इज इक्वल टू 0. थोड़ा लेंदी हो रहा है डेफिनेटली क्वेश्चन, बट अभी भी समझ में बहुत कुछ आ रहा है क्वेश्चन में कि एक तो ये चीज 0 होगी बिकॉज सम ऑफ द रूट्स है ये. तो दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो यहां से वैल्यू एक आ गई 2r इज p प्लस क्यू. बड़ा अच्छा रिलेशन आया देखा जाए तो हमारे पास. और एक चीज हमें पता चल गई. ये क्या हो गई? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. देखा जाए तो देखो, whenever there is a question at from quadratic equation at JEE Mains, it is always asking you very very basic stuff. So ये क्या बन गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा है क्या? अल्फा माइनस अल्फा इज पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू टाइम्स आर. यही बना हमारे पास. तो ये क्या हो गया? माइनस अल्फा स्क्वायर
इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू टाइम्स आर, माइनस हटा देते हैं, हमें निकालना क्या है, एक तो 2 अल्फा, तो मैंने क्या करा यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और क्या कर दिया इसको, देखो जगह जगह 2 टाइम्स पी प्लस क्यू आर माइनस 2 पी क्यू कर दिया, ठीक है, सॉरी पी क्यू। अब नोटिस करो मेरे पास बहुत अच्छे रिलेशंस मिले हुए हैं। आई हैव अ रिलेशन विच सेज 2r is equal to p plus q. If I have a 2r plus p plus q, now you know I can directly use it value. It will become what? 2r is nothing but p plus q whole square minus 2pq, which gives you the relation nothing but p square plus q square, which is lollipop again, B option. सो मैं अपने खाते में +4 और करने वाला हूँ, बिकॉज आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि ये क्वाड्रेटिक का इतना टफ क्वेश्चन नहीं था जितना हमें लग रहा है। तो अभी तक हम 8 नंबर बना चुके हैं अपने पेपर में फॉर द फर्स्ट 6 मिनट्स। मैं मान के चलूँ 6 मिनट लगे होंगे आपको ये सब करने में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अपना क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करते हैं, शुरू करते हैं, तो अब आता है क्वाड्रेटिक के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की बारी। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन राइट नाउ अगेन इफ यू नोटिस 63, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या स्ट्राइक करती है यहाँ पर, यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गए तो कॉम्प्लेक्स का। वाई? बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस इज सिंपल, इट इज नॉट इवन आस्किंग यू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये तो सिंपल किस पे पहुंच गया आपका, नोटिस करो, आयोटा पे। बट यहां पर इनहेरेंटली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी छुपा हुआ है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं करके जा रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन द करिकुलम दैट यू शुड हैव डन। अब यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसा है, दिस इज एक्चुअली व्हाट जेईई मेंस डेफिनेटली आस्क यू ऑन, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट। ओमेगा इज, टेल मी गाइज, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, this is the value of omega. And what is the value of omega square? Omega square is -1/2 minus omega √3/2, ठीक है, ये होता है, हमें पता है ये बात। तो if you guys notice, if I just multiply the numerator by a negative sign, तो ये -1 माइनस आयोटा √3, और नीचे भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके की चीज बन जाएगी। And you are just now required to multiply the whole stuff by, yes, by 2. So if you notice, this is what you could have written very, very easily, right? If you know this fundamental. If you know this, what we have now converted this to, the numerator is omega square, and this is omega, this is omega, and this becomes omega raised to power n, because there was every time omega raised to power n. So now you just want to solve what omega raised to power n is equal to 1, and we know that the cube root power is nothing but omega cube is actually equal to 1. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या हो गया आपका, बी। अगेन लेट्स ऐड 4 marks more. If you have done real hard work for your JEE preparation, you have still got 12 marks if you have prepared the smart way. अगर आप पढ़ेंगे तो there is no possibility by which you cannot score really good score at JEE Mains. I have repeatedly, shoutedly saying people, everyone, every time that if you are not doing cube roots of unity, that means you are not studying complex numbers. So please make sure that you do this cube root of unity. All right, let's see the 64th. देन लेट्स मूव अगेन फॉरवर्ड। और 64th में रीड करते ही एक तो मेट्रिसेस आता है। तो जब भी मेट्रिसेस आता है ना, तो आई हैव अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई वुड बी एबल टू डू, बिकॉज इनहेरेंट फीलिंग क्या होता है यार, मेट्रिसेस टफ नहीं हो सकता है। और फिर से नोटिस करो ये पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम है। इट इज नथिंग दैट आई वुड रादर से कि ये नया क्वेश्चन है। ये नया क्वेश्चन नहीं है। क्यों नया क्वेश्चन नहीं है? इफ यू नोटिस दिस क्वेश्चन इज वेरी मच व्हाट यू गाइज मस्ट हैव डन इन योर क्लासरूम्स आल्सो। ये क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0, तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। और इसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बी इज नथिंग बट ए इंटू ए डन 20 टाइम्स। सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेरे को पता है ऑलरेडी, आई नो दिस फैक्ट दैट देयर विल बी अ पैटर्न। I cannot keep on multiplying 20 times, right? 20 times multiplication तो कोई करने को ही नहीं देगा, पेपर में 3 घंटे लग जाएंगे। So ये पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम होगा, राइट? इट इज अ पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट वी नो फॉर श्योर। ठीक है, तो अब पैटर्न बेस्ड है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग,
चलिए सो लेट्स जस्ट डू फर्स्ट कि बी को छोड़ो, बल्कि बी को भी बाद में निकालेंगे। बी क्या है, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो ए इंटू ए, ट्राई टू फिगर आउट द पैटर्न वेरी वेरी immediately if you can guys can do that, and I am going to solve as if I am a student, right? मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ उसी तरीके से पढ़ाने की जिस तरीके से एक बच्चा सॉल्व करता है, शायद इसलिए भी आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाने का तरीका। तो चलिए जल्दी देखें तो ये क्या बनता है यहाँ पर। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट कॉलम, और जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे जल्दी से, राइट, दिस इज व्हाट यू विल डू, देन फर्स्ट एंड दिस, राइट, क्या बन रहा है ये अभी भी 0, ठीक है, और अगला भी क्या बनेगा, अभी भी 0, ठीक है। तो पहला कॉलम वाला काम हो गया और एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 0 0, राइट। नेक्स्ट क्या होने वाला है, आप इसको पिक करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो अब की बार देखो यहाँ क्या हो रहा है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, सो दैट मीन्स अब की बार कुछ अच्छी चीज हो रही है। वो क्या हो रही है कि यहाँ पर आ रहा है 2। नेक्स्ट एलिमेंट पकड़ो, अब की बार क्या मल्टीप्लाई होगा, ये वाली और ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब की बार फिर से क्या आ रहा है, 1 इंटू 0 1 इंटू 1, नाउ यू कैन अगेन सी 1 इज कमिंग, राइट, दिस इज 0 अगेन। आई एम जस्ट गोइंग अ स्टेप फॉरवर्ड। और अगला देखो, अब जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें समझ में आना चाहिए था, और ये पैटर्न है, प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को कर लो, ये आपके सीबीएसई तक में भी आ सकते हैं। अब नोटिस करो क्या बन रहा है पैटर्न, इन तीनों को इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके you are actually getting, let me write with a different pen, 1 plus 1 plus 1, राइट। और यहां पर क्या रहा था, 1 plus 1 और यहां पर 1। तो अगर आप a स्क्वायर देखते हो तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 0 0, 1 plus 1 2 हुआ, ये 1 ही रहा, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये 2 ही रहा और ये रहा 1, isn't it? ठीक है। तो अब एक स्टेप और हल्का सा अगर हम आगे चलते हैं कि ए स्क्वायर इंटू ए करते हैं हम लोग बाय चांस, तो देखें उससे पैटर्न रियलाइजेशन होगा। अभी एकदम से जंप नहीं करना है कि सर पैटर्न क्या है, मेट्रिसेस में 3 तक जरूर करा करो अपना पैटर्न डिटरमिन करने के लिए, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू हियर। सो अगर मैं एक और करता हूँ, प्लीज, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर आप तो सारे क्वेश्चन करने लग गए और ये तो बहुत लेंदी है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपको नंबर बनाने हैं, आपको ये नहीं देखना टाइम कहाँ बच रहा है। इफ यू हैव सम क्वेश्चन ऑन विच यू हैव 100% कॉन्फिडेंस कि 4 नंबर बनेंगे, 4 नंबर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन सेविंग टाइम हियर एट दिस पॉइंट इन टाइम। चलिए, तो पहला फिर से वही 1 0 0, क्योंकि दोनों एलिमेंट 0 हैं। अब देखो इस वाले एलिमेंट में a टू 1 में क्या होने वाला है, इट इज गेटिंग 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, और ये वाला एलिमेंट तो अभी भी क्या आ रहे हैं, चलो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाले एलिमेंट क्या थे मेरे, 0 और ये भी 0। इसमें क्या आ रहा है, आप क्या करोगे इस समय, सेकेंड रो और अब सेकेंड कॉलम here, right? That is what you guys generally do. Again, you will notice that you are getting only 1 as the answer, right? So here it is again 1. Now again, if you notice, the next step you are going to do is multiply this. This is again going to give you nothing but 0, right? So let's go back and do the calculations. We are done. This is, oh sorry, this is 1 and this is 0. Now the important point here now would be to understand how this behaves, right? Because since the entire column 1 is 1, all of the things are going to be added. That is, it will be 3 plus 2 plus 1. It is nothing but 2 plus 1 and it is going to be 1. Now you can actually figure out a pattern. So for a cube, what is the pattern, and why I am teaching you, this is an important thing that you should understand. For a cube, what is happening? Let's see. For this here, sum of first 3 natural numbers, ठीक है। इस वाले एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड नेचुरल नंबर्स, यही पैटर्न बन रहा है, और ये वाला एलिमेंट तो इसके साथ रिपीट हो रहा है। तो नाउ आई हैव गॉट माई पैटर्न विच आई वॉन्टेड टू नो। तो अगर मुझे पैटर्न पता लगाना था तो पैटर्न पता लग गया है, एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। सो a रेज़ टू पावर 20 अगर मुझे निकालना था तो पैटर्न क्या था, ये 1 0 0 तो एज इट इज रहेंगे, जहां 1 आ रहा है वहां भी चेंज नहीं होगा 1। ये क्या हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, ये देखो क्या बन गया, ये 20 ही आ जाएगा। क्यों 20 आ जाएगा, ये सेकंड नहीं बोलना चाहिए, ये वाली चीज मैं हटा के दिखाता हूं तुम्हें वापस से। ये 2 प्लस 1 था, ठीक है। 2 प्लस 1 का क्या मतलब था, ये यहाँ पर कितना आ गया 3। जस्ट नोटिस, इससे पहले वाली टर्म में हमारे पास क्या था 2। दैट मीन्स जब a क्यूब है तो ये
3 है, दैट मीन्स सेम. सो दैट मीन्स ये 20 होगा तो 20 होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, समीशन आर वेयर आर गोज फ्रॉम 1 to 20. This is what you have to learn, and this is another formula which people would love to know, is n into n plus 1 by 2. If you notice, this might have been very obvious problem for some of you, but someone would still say, और वो मुझे एग्री नहीं करेंगे कि सर मैं ये पेपर में सॉल्व करता, बट अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आई वुड डेफिनेटली वुड हैव गॉन फॉरवर्ड एंड टोल्ड यू कि यार ये तो करना बनता है पेपर में, नहीं तो आप ढंग से प्रिपेयर करके नहीं गए. सो 210 वैल्यू आ गया. Don't be in a hurry to answer 210. आपसे पूछा गया है sum of elements of the first column. That means now you will have to add all of them. So if you add all of them, the answer is nothing. What you will say, sir, answer आ गया मेरा कितना, 231, which is nothing if you see option C. ठीक है. सो मेरे हिसाब से तो अभी भी ये वाला क्वेश्चन भी आप पेपर में जरूर करके आते, क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड है. आई नो टाइम कंज्यूमिंग है. देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट. सो प्लीज फॉर गॉड सेक आप कंसंट्रेट किस पे करो यार, मार्क्स भी तो बनाने जरूरी हैं. आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन जिनको हम छोड़ेंगे, पर जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें टाइम स्पेंड करना. अगर कई कई जगह आपको लगे कि यार 4 मिनट भी लग रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो लगाओ. मुझे यहाँ समझाने में 8 मिनट लग रहे हैं, पर आपको सॉल्व करने में शायद 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे. 4 मिनट 4 मार्क्स मेरे हिसाब से it's a valuable deal. You should invest your 4 minutes in these kind of questions, right? Got it? So now if I do the calculation, we are already sitting at 16 marks. चलिए 65th क्वेश्चन. 65th भी मेरे हिसाब से सबसे पहले अटेम्प्ट करने लायक है. क्यों? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत रिग्रेसली प्रिपेयर करने चाहिए. आई एम राइटिंग इट फॉर यू गाइस. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, राइट? These are, you should be really well prepared, very well prepared, because ये पैटर्न बेस्ड है, इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं आती है बार बार. सो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन अगर आप नोटिस करते तो ये लक की बात थी कि दिस टाइम राउंड इट वाज इवन फर्दर इजी. क्यों इजी हो गया? कुछ लग रहा है देखते हुए, नोटिस करा तुम लोगों ने? k+3 जनरली मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज इन, वो कितने में होता है भैया? 3 वेरिएबल्स, राइट? इट वाज इन 3 वेरिएबल्स, वेयर एज हियर देयर आर ओनली 2 वेरिएबल्स. सो ये तो देखा जाए आपके लिए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया. सो दिस कन्वर्ट्स योर दिस क्वेश्चन टू एक्चुअली, इफ यू कैन थिंक ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अब देखो स्ट्रेट लाइन का फंडामेंटल क्या है. ये कहते हैं यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दीज डू नॉट हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कितना, नो सॉल्यूशन चाहिए हमें. ठीक है. अब नो सॉल्यूशन कैसे आएगा? सो नो सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेट लाइन, आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइंस हैं. स्ट्रेट लाइन नो सॉल्यूशन कब देती है? सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना भाई उनके में. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन. अच्छा, अगर आपको दो लाइंस का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं चाहिए तो इसका मतलब वो दो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं बट नॉट कोइंसिडेंट. पैरेलल बट इंपॉर्टेंट, पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है? एक के ऊपर एक, क्योंकि अगर एक के ऊपर एक आ गई तो वो कितने हो जाएंगे सॉल्यूशंस? तब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे. तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था कि ये लाइंस क्या हो, पैरेलल हो. पैरेलल होने की कंडीशन क्या है भाई? जल्दी से बता दो मुझे. a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/2 c2. ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2. ये क्या है? a1 b1 c1. अगर मैंने लाइन को ऐसे लिया था a1x b1y प्लस c1 इधर लिख लो या इक्वल टू c1 लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे. सो नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, इट बिकम्स k+2 बाय k should be equal to 10 upon k+3, but this ratio should not be equal to k upon k-1. सो आप अगर इस पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो क्या बनता है? देखो k+2 इंटू k+3 इज इक्वल टू 10k. ठीक है, ये कितना बन गया? k² प्लस 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 10k, विच इज नथिंग बट k² माइनस 5k प्लस 6 इक्वल टू 0. यहाँ से दो वैल्यूज आती हैं आपकी k की. क्या आ रही है? 2 और 3. सो दैट मीन्स देयर कुड बी 2 आंसर्स. बट डू नॉट जस्ट रश ऑन. अभी आपको क्या चाहिए? लेट्स सी द वैल्यूज आफ्टर पुटिंग. सो हमारे को रेशियो पता लगानी है पहले. क्यों नहीं कह रहा है ये डायरेक्ट आंसर्स? लेट्स सी.
k इक्वल टू 2 पे रेशो क्या आ रही है, k इक्वल टू 2 पे ये कितनी रेशो बन गई, 4:2, दैट मीन्स 2 आ गई रेशो। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हो तो ये भी कितना दे रहा है, 2 आ रहा है रेशो। चेक इज दिस 2। अगर मैं k की वैल्यू यहां पर इफ आई पुट k इक्वल टू 2 इन दिस, आई एम स्टिल गेटिंग 2:1 रेशो, वेयर एज इट शुड नॉट, क्या बोला है साफ साफ तुमने, देखो यहां पर इट शुड नॉट हैव बीन इक्वल टू this ratio, so that means k is not equal to, k should not be equal to 2 because उस पे तो ये क्या हो रहे हैं, coincident। गॉट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो अगर मैं थर्ड वाली बात करता हूँ कि k इक्वल टू 3 भी मेरे पास एक पॉइंट है, लेट्स मी रिमूव दिस देन। तो अगर k को 3 डालते हैं तो k इक्वल टू 3 पे फर्स्ट रेशो कितना आता है, 5:3। लेट्स सी व्हाट इज द रेशो व्हेन यू पुट इट in this particular one, it says 3:2। अब की बार रेशो मिसमैच है तो k equal to 3 will be the answer। That is why only one answer is there, that k is equal to 3 will be the answer which will match। This is the answer। okay, then number of values पूछा था, तो number of values अगर पूछा जाता है तो कितने आंसर हैं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। Now coming whether you should have attempted this in the paper or not, I would rather say this is a tough one because lot of things were there, but people who are targeting 60 and 70 plus should have been able to solve। But I will still stick कि मैं कहता हूँ अभी ये नहीं मानते, हम अभी भी फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। हम 16 मार्क्स पे बैठे, ये छोड़ सकते थे अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आया था। ओके, लेट्स देन मूव टू 66 के लिए देखते हैं क्या करना है। और 66 अगेन बहुत सारे बच्चों के हिसाब से टफ होगा। क्यों? क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखो आता होगा तो बहुत आसान है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जहाँ तक बात करी जाती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है भाई। इट इज़ नॉट आस्क्ड एट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लेवल एट जेईई मेंस। लेट्स रीड द क्वेश्चन, इफ इट मेक सेंस कराया होगा तो करेंगे, अदरवाइज वी लीव इट। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2000, क्या बोला है, 2000 and 5000, numbers ranging between 2000 and 5000 which can be formed using the digits। कौन कौन सी digits हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4, these are the digits। repetition of digits is not allowed and are multiple of 3। again a very standard problem। I don't know whether you would say this is a standard, but मेरे हिसाब से तो देखो ये रिपीटेड है फिर से एक प्रॉब्लम। बट मान के चलते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 बंदों के लिए टाइम लगेगा। मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या मतलब है, जैसे सम आना चाहिए, क्या चाहिए यार, 12 बन सकता था, 15 बन सकता था, 18 सम बन सकता था, तब वो क्या होंगे, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होंगे। बट आई वुड स्टिल से दिस इज वेरी वेरी ईजी। बट चलिए मान के चलते हैं कि यार आप इतने स्ट्रॉन्ग शायद नहीं हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, एंड वी माइट हैव टू लीव दिस क्वेश्चन। सो मैं पर इसमें एक चीज रिकमेंड करूंगा, दैट यू, सिंस दिस इज एन ऑनलाइन एग्जाम्स नाउ, you should actually mark for review these kind of questions। why actually? Because you're leaving this question because it might take time, right? And you're less confident, so when you should mark for review, when the question is actually going to take, you are less confident in solving that। मतलब आता है पर पूरा नहीं आता है, ठीक है, और आपको लगता है वो लेंदी होगा आपके हिसाब से, less confident plus a lengthy combo, then you should mark for review which should be done। अब अगर ये भी पूछ लो कि which should be done, definitely sir। तो अगर आप confident हो, if you are confident that you know the concept really well, इसमें फिर लेंदी वाला फंडा नहीं लगाना है, तब मैं लेंदी नहीं देखूँ। इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू शुड एक्चुअली गिव द अटेम्प्ट, यू शुड डू इट। दैट्स हाउ आई विल चेंज द स्ट्रेटेजी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन नाउ। Okay, but even if you were supposed to, let's say, do this question, if I have to teach you, so what I could teach you here is that now you have very limited set of numbers, that is 1 0 1 2 3 4। Now you have to pick how many digits, 4 digits are required because it's a number between 2000 to 5000, it's a 4-digit number। You have to pick such 4 digits which are multiple of 3। I'm assuming you have to leave this
and you should leave this because there is 0 also. So let's leave this for the time being. I would take this question sometime later. Let's see how you can actually go and first of all improve your score. So we are sticking with your 16 marks as of now, and let's move to the 67th problem. Okay, 67th problem looks like a binomial now this time. Okay, 67th में हमारे को क्या करना पड़ रहा है, बाइनोमियल. और बाइनोमियल से तो वैसे ही हमारी थोड़ी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, राइट? सो बाइनोमियल इज बेसिकली व्हाट आई हैव सीन 99% ऑफ with the student, they are less confident, right? They are less confident. I'm talking about people who are targeting 150 about, right, score. People who are targeting 300 would definitely love to solve this because for them it is actually easy. So ये क्या कहता है, coefficient of x square बताना है, and coefficient of x square in a very lengthy calculation, right? So I would rather say यार ये थोड़ी lengthy calculation वाला question आ गया, तो यहाँ पर भी multiple cases बनेंगे x square के, and in this also you will have not multiple rather, but one case here, right? One case from this. So you will have to add a lot of them, right? But even if you notice, उतने केसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे ये डिटरमिन करा जा सकता था. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये क्वेश्चन अजीब सा क्यों हुआ वो भी डिस्कस करते चलते हैं. कि सर ये ट्राइनोमियल आ गया, एक तो वी आर नॉट यूज्ड टू सॉल्विंग ट्राइनोमियल्स. सो मेरे हिसाब से अगर आपको स्कोर की बात करनी थी, वी कुड एक्चुअली लीव दिस क्वेश्चन. मार्क फॉर रिव्यू भी बाद में कर सकते थे. यू कुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज इफ यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल लेस कॉन्फिडेंट and you have not done binomial, which I know for sure most of you would have, you leave this. Let's move to 67th. We still are at 16 marks. Let's just keep writing on every page where we are. We are assuming that we have already secured 16 marks. चलिए next question देखते हैं. It says AP आ गया कहीं ना कहीं, तो AP से थोड़ी बहुत तो हमारी अच्छी जान पहचान है. तो 68 क्वेश्चन को अगर रीड आउट करते हैं, you have 1 by x1, 1 by x2 and so on, 1 by xn. ठीक है, ये दे रखा है हमें, एंड दे आर गिवन टू बी इन AP. अब इसमें बहुत सारे होशियार बच्चे क्या सोचेंगे कि सर ये x1, x2, x3, तो इसका मतलब कि इसमें हो गया HP में. HP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए दिमाग खराब नहीं करना है, उसको AP में ही रहने देते हैं. आपको क्या दिया है, x1. लेट्स नोट डाउन व्हाट इज गिवन. x1 इज इक्वल टू 4, x21 इज गिवन टू बी 20. दिस इज गिवन. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. n is the least integer such that xn should be greater than 50, right? Least value of n at which you will get xn greater than 50. तब आपको इनका सम पता लगाना है, which are the numbers in AP. ठीक है, थोड़ा अगर देखो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है. ठीक है, तो अब मुझे जो थोड़ा फीलिंग आता है एज अ स्टूडेंट इसमें कि यार ये it's somewhat complicated, right? I am not sure whether I would be immediately able to do it or not, but it is somewhat complicated. But I was still feeling कि यार somewhat confident, but I think it is going to be tricky. So that is one of the parameters you can decide to put in mark for review, right? So I will put this question in mark for review and maybe come back later when I have sufficient time. That's what I am going to do. But having said that, if you wanted to start, अभी भी अगर डाउट है, जिन लोगों को लगता है कि नहीं है, तो थोड़ा सीरीज बना के you could have seen. So how you can write 1 by x1 21 will be 1 by x1 plus 20d, right? ये एक further step होता. But since here are reciprocals involved, right? Reciprocals are involved. That is actually what creates the confusion. ये reciprocal जो है ना, ये confusion create करते हैं. That's the reason I'm not interested to take this question further. Okay, so I'll be moving forward with 16 marks only. Both the questions one I'm going to leave and one I'm going to mark for review. So next question, 69th, again brings out the sequence series problem. Now you have to find the sum of this 20 terms. Let's see, it says 1 plus 3 by 2 plus 7 by 4 plus 15 by 8. So जो series वाले problems होते हैं, your target is very simple in them. And what is the simple stuff? That is the pattern. If you can figure out the pattern here, right? So for example, the pattern has to be found. And I suppose this is something which
आई वुड रादर से इतना भी आसान नहीं है, तो ये इजी टू मीडियम कैटेगरी में होता है कि यार ये कई लोग कर पाएंगे ये पैटर्न और कई लोग शायद नहीं कर पाएंगे। तो एनालिटिकल होता है, ये सबका पर्सपेक्टिव है अपना अपना। सो इफ यू नोटिस न्यूमरेटर, व्हाट इज हैपनिंग विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट? इट इज लेट्स से 3/2, देन इट इज 7/4, राइट? 7/4। व्हाट पैटर्न इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड? मेरे को जो आता है, आपको हो सकता है कुछ और आए, मुझे ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, 4 डबल -1, डबल द डिनोमिनेटर -1, double, that is 2 times the denominator -1. Isn't it this the pattern? So I can actually go on and say 1 plus this will be what? You can say it is 2 minus 1/2. It is 2 minus 1/4. It will become 2 minus 1/8. ऐसा कुछ सीरीज बन जाएगा ये सारे अलग अलग टर्म्स का, नोटिस करो. So I can actually see this as always 2 minus 1/2. Then it is 2 minus 1/4. और ये अब आपकी एक सीरीज बन गई जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते थे. सो दिस बिकम्स 1 + 2 + 2. अगर मुझे 19th तक जाना है तो ये कितनी बार हुआ, 20th तक जाना है तो ये 19 बार ऐड होगा क्योंकि स्टार्टिंग तो 1 से हो रही है. और माइनस में कहाँ आ गए हम, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8. ये भी कितनी टर्म्स होंगी, 19 टर्म्स. क्यों 19 टर्म्स? बिकॉज वी हैव टू गो टिल 20 and the starting was with 1, right? Maybe you can add 1 here, that you can also do. So ये तो सिंपल हो गया. ये कितना हो गया, 1 + 19 × 2. और ये क्या हो गया, जीपी. दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड जीपी. ठीक है, स्टैंडर्ड जीपी का फॉर्मूला लगा दो. वो क्या होता है भाई, 1, लेट मी राइट द फॉर्मूला, a × 1 - r raised to power n by 1 - r. That is what you will do. So ये क्या बना, 1/2 × 1 - 2. 1/2 इसका वो है रेस्ट, और कितनी टर्म्स हैं, 19 टर्म्स हैं. सो ये कह सकते हैं 2 raised to power 19 upon 1 - 1/2. ये 1/2 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास बचता क्या है इसमें, 1 - 2 raised to power 19. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. ठीक है, नोटिस करो ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गए यहाँ पर. तो ये बचा क्या आपके पास, 38 + 1/2 raised to power 19, which absolutely matches with your 4th. I think you should have done this in this particular context because इतना बेसिक एनालिटिकल स्किल्स हमें लगाना आना चाहिए. तो मैं अपने पेपर के सेट में इसको, अगर मेरा कोई स्टूडेंट होता तो उससे एक्सपेक्ट करता कि यार आप इसको जरूर करके आते और 20 मार्क्स के साइन तक पहुंच जाते. दैट इज हाफ वे इन द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर. ऑलराइट, सो मूविंग फर्दर, लेट्स नाउ sit with the 70th is limit problem. And limit में अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है या तो पेड कोर्स और फ्री कोर्स, whatever course that I've taught you, so in 70th it's a limit problem and I always taught you कि यार लिमिट में अगर कुछ भी पढ़ते हो तो LH रूल जरूर पढ़ो, नहीं तो आप JEE मेंस की तैयारी करके ही नहीं गए हो फिर से. So if you notice, let's write the question. It says limit x approaching 0, 27 plus x raised to power 1/3 minus 3, 9 minus 27 plus x raised to power 2/3. Now I've taught you that for LH rule, it should be a 0/0 form of limit or it should be infinity by infinity form, right? This is what is required. So if I now put x equal to 0 here, what you are going to get, 27 raised to power 1/3, which is nothing but 3. If you notice, the numerator becomes nothing but 0, isn't it? It becomes 0. Similarly, if you notice, you put, what is the value, 27 raised to power 2/3 will be nothing but 3 square, which is 9. Now at the same value, denominator also becomes 0. Hence this is actually a 0/0 form. If this is a 0/0 form, LH rule is applicable and you will do nothing but differentiation. If you do the differentiation, you will be left with 1/3 27 plus x raised to power -2/3. नीचे वाले का पावर बताओ क्या होगा, ये हो गया -2/3 27 plus x raised to power कितना होगा, -1/3. ठीक है, यही होगा. और ये माइनस बाहर ले आते हैं तो लिमिट क्या बचा, लिमिट x अप्रोचिंग 0, ये कितना हो गया, 1/2
और ये कितना हो गया 27 प्लस -1/3 सिंपल। और अब इसमें लिमिट में कुछ भी सॉल्व करने के लिए बचा, देयर इज नथिंग टू सॉल्व इन दिस लिमिट बिकॉज देयर इज नो जीरो इन द डिनोमिनेटर. जस्ट गो वेरी इजीली पुट द वैल्यू ऑफ x equal to 0. दिस गिव्स यू -1/2 into 27 raised to power -1/3. 27 is, you know, is cube root. This gives you nothing but -1/6 as the answer. And again, I would rather say this is increase in the score. Question over. राइट. सो 2 क्वेश्चन हमने पहले छोड़े और अब 2 क्वेश्चन बनाए, जिसकी वजह से अब मैं किस में आ गया 24 मार्क्स. एंड बिलीव मी, आई वॉज टेलिंग यू दैट कहीं कहीं जगह पे हमने 5-5 मिनट लगाए, 4 मिनट लगाए क्वेश्चन पे. आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. Right, save time because these questions could be done under 30 seconds. Right, these questions could be done under 30 seconds if you know the exact rule which is to be applied. For example, we have done here LH rule. Got it? Okay, so moving further, let's stick to 71 now. 71 question. It's basically a C&D problem, continuity, differentiability, which I believe you are not very comfortable. I have not seen a student, average level student who is very comfortable. So you're not very comfortable. So if you're not very comfortable, I would be at back foot even before looking at the question, right? That's, I know that what is your frame of mind. So मैं उस हिसाब से solve कर रहा हूँ मानते हुए कि आपका frame of mind क्या होता है. And you want to prove this at continuous at x equal to 0. So that means you have to solve limit x approaching 0 fx, which is somewhat complicated. Right, this is somewhat complicated. So I am going to save my time and I'm not going to solve this. I have decided that I'm not going to give my time to this particular question and I'll move forward. And in fact, I'm not even going to mark this as review. मार्क फॉर रिव्यू जो ऑप्शन होता है, मैं उसमें भी नहीं घुसूंगा इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज मैंने अब तुम्हें क्राइटेरिया बता दिया. द क्राइटेरिया इज फॉर मार्क फॉर रिव्यू इज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इट फील्स कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू में भी मत डालो फिलहाल के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी दी 72 क्वेश्चन. नाउ इट लुक्स लाइक अ डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम, और डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन हमारा है बिकॉज वी फील दैट we can do it, right? That is the feeling. Now immediately you can see that this is a parametric form, right? It's a parametric form of a function where you will have to do dx by dt and dy by dt. But if you are thinking on this, then I would say you are thinking wrong, because the examiner, understand, the examiner never wanted you to find the derivative of either cosec inverse x or secant inverse x. They never want this to happen. Never ever they want this to happen. So if you are solving it in this particular direction, then means you are solving wrong. But what does the examiner expect of you is that you should know this formula, that secant inverse plus cosecant inverse x is equal to pi by 2. This is the basic formula of inverse trigonometry. So if you know this, that is what is the minimum expectation, that if you multiply both of them, then there is a possibility that what you will get, since the base is same, these powers will get added and you will be left with 2 raised to power pi by 2 under root, which you can eventually write 2 raised to power pi by 4. Now if you see, xy is nothing but equal to a constant, and now if you differentiate, this question is nothing but a lollipop. Now if you see, this derivative is y, x dy by dx equal to 0, and dy by dx is nothing but equal to minus y by x, which is the answer. That's it. Question over. Now you can see and you mark option number 3. I don't know whether I should judge this problem as a scoring opportunity or not. Most of you would have felt that this was a scoring opportunity, but I still believe let's stick to 24 marks. We are talking about average securing of marks, so we are not going to count this in our score. Let's stick to 24 only. Okay, the next problem, let's see the 73 now. Let's move to 73. M and M, ये देखते ही एकदम से पता चल जाता है क्वेश्चन किसका है, मैक्सिमा मिनिमा. एंड इफ यू सी, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, which we have also done is nothing but global maxima minima. And if you have done global maxima minima very carefully, you would know that these
are the questions which are mostly based on polynomials. You must have done this in your board level examination. So this is for maxima as we would expect, and this is for minima, that's for sure. So now coming back to the function is 2x cube minus 9x square plus 12x plus 5. And you also know that for the global maxima and minima, you have to have a range of x or domain of x which is given to be 0 to 3. ठीक है, ये भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बात. तो अब आप क्या करेंगे, f-x क्या हो गया, 6x square minus 18x plus 12. I can say 6 can be taken common. This will become minus 3x plus 2. And what will be that if I say f dash x equal to 0, the roots of this equation are x equal to 1 and 2. That means these are the points of extrema, या तो maxima या minima. वो आप कैसे पता लगा सकते थे, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे. So this is double derivative, or you can also follow the method of this plus minus plus. So if the sign of the f dash x changes from positive to negative, then this is point of maxima. Negative से positive, this is point of minima. So but these are points of local max and min, right? So now you have to just check the values at which many points, f1, f2, और importantly कौन से दो points, f0 the boundary points and f3. I suppose this question you should have done because this is something very very obvious, because this is what examiner would expect कि यार मैं कहीं तो easy question डालूंगा, अगर आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हो तो इसमें पक्का पक्का आपकी गलती है. So f1 क्या हो गया, जल्दी से आप सॉल्व कर लें. So if you see, f1 is nothing but 2 minus 9 plus 12 plus 5. Let's just quickly, very quickly solve this. So ये कितना हो गया, 9 minus this, ये कितना, so this comes out to be 10. f2 निकाल देते हैं जल्दी से एक बार हम लोग, ठीक है. f2 कितना हो गया, 2 into 8 minus 9 into 4 plus 12 into 2 plus 5, right? If you notice, this is nothing but 16 minus 36 plus 24, right, plus 5. So 24 plus 16 is 40. कैसे जल्दी कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखा रहा हूँ. 40 प्लस दिस, ये क्या आता है, 9, राइट. चलिए f0 क्या वैल्यू आएगा, f0 स्ट्रेट फॉरवर्ड 5. f3 वी विल हैव टू कैलकुलेट. सो दिस लुक्स लाइक कि कैलकुलेशन तो है यार, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है. ग्राफिकल अप्रोच में भी जा सकते थे, पर मैं जा ही नहीं रहा उसमें, बिकॉज वो थोड़ा और लेंदी है. सो 3 क्यूब इज 27 minus 9 into 9 plus 12 into 3 plus 5. ये कितना हो गया देखो, 54 minus 81 plus 36 plus 5. So if you notice, this is 54 plus 36 is 90, minus 81 is 9 plus 4, this is 14. So what is the maximum value that you are obtaining? It is 14. What is the minimum value that you are obtaining in all of them? Is 5, which is actually happening at all the boundary points only. So that means this max value is nothing but 14, min value is 5, right? My bad, min value is 5. So the difference that you were expecting is 9. This is the answer that is going to give you plus 4, and I'm going to count this as plus 4 despite the fact that it is going to consume time, but it is really really easy, which I expect that you should have done. So we are now moved to 28 marks. Okay, now let's see the next question, which is basically a indefinite problem. I'm generally not very fond of taking indefinite problems because they tend to be very very lengthy, but do not just leave them by just reading. Try to solve the first two steps. That will give you a good hint whether you can solve this question or not. And if you notice, by this, just writing this, you get a sense of feeling that यार ये थोड़ा शायद आसान है. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें 10x को इक्वल टू t लेता हूँ, जो क्या बनेगा, secant square x dx equal to dt, which I can any given day write it as 1 upon 1 plus t square dt, right? ये मुझे समझ में आती है बात, ठीक है. तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और लिखता हूँ पहले, तो इतना तो ये बन गया that this is what I am going to get, right? इतना तो ये निकल गया dt, ठीक है. ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो गया है, ठीक है. अब मुझे लगता है थोड़ा सा सेंस आ रही है कि सर दिस इज कॉम्प्लिकेटेड नाउ,
right, I might not be able to solve. But having said that, if you see, it is still a easy problem. Why? Because now it's a partial fraction problem. But मैं इसको काउंट नहीं करने वाला हूँ अपने नंबर्स में. आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू हाउ यू शुड हैव solved this question. Sorry, not by using by parts but partial fraction. सो अगर मुझे सिर्फ सिखाना है उसके पर्पज से ले रहा हूँ, जिससे आप लोग समझ पाएँ कि कई बार क्वेश्चंस आसान होते हैं और हमें टफ लगते हैं, होते नहीं हैं. So if you just write this like this, notice these two things are equal. So you can just say equal to integral of this, as simple put. Because if you take the LCM now, that 1 plus t square is going to cancel out completely. And this is now all the formulas, right? You know that this is tan inverse t, which is also given somewhere, right? Notice, right? This is tan inverse, and you will put it tan inverse tan x, which will again give you x, if you notice, which is mentioned in the question here, right? Which is there itself in the question. But the point is, now you will again have to solve this, right? This is solve. Now, this is lengthy because now we cannot do something about this. This is quadratic, right? And though I have taught you trick method for this, please go and check the trick video where I have told you, but I still saying I'm not very fond of tricks. I am not sure whether you would be able to apply them in the exam scenario or not. But what I am going to tell you is that when these kind of questions come and they become very tricky, I would definitely mark this for review. Though having said that, I am saying that I have just told you that how you should teach you. That's the reason I'm saying mark for review, because there is a hint that you could do this. But if you have been able to solve this till this step, right, then you should not mark for review. If you have moved to this step now, because you know this is a standard problem, right? This is a standard calculation. So if this is a standard calculation, moving for mark for review only because it is going to be time consuming, then it doesn't make sense. I am assuming that you are not able to move forward here at this point, right? At this time interval, you were stuck and you were not able to go ahead. That is what is my consideration. All right, so we are still stuck with 28 marks. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास क्वेश्चन है 75th, which is a now we move to the definite part of the world, right? चलिए. Okay, so let's see the 75th problem. What it says that a function fx is given to be 0 to x t times sin x minus sin t dt. You have to find the value and all the options are given in the differential form. So there is obviously a rule which you must have done and which you should actually, if you are preparing for JEE Mains, that is Leibniz rule of differentiation for integration, right? Please go to my videos if you haven't done. I definitely recommend everyone, and I teach everyone in my courses. If you are targeting JEE Mains, this eases out this stuff. Now I'm going to tell you questions which, let's say, even if you don't know, then this question is also doable, because this is something like this, right? Let's split the integral. So this is t sin t dt. For this integral, if you notice, this sin x term is actually a constant. You don't have to worry about it. You can actually take it outside. So when you take it outside, it will be sin x 0 to x t dt, right? And for this particular, since there are t and t, you will have to use by parts. And for by parts, I'm going to use this t as my first function, and the second function will be integral, that is sin t. So if I just use that information that is given, so what it would be, t into integral of sin is minus cos, and you will substitute the value x and 0, minus, that is derivative of the first. Let's see this, derivative of the first, right? Derivative of the first is t, and the integral was minus, so this becomes plus cos t, isn't it? That is what we are going to do. But having said that, I do not expect this kind of maturity again from a very average kind of preparation. I should not say average student. There is nothing called average student, कुछ नहीं होता है. But हाँ, average level of preparation से मैं generally expect नहीं करता हूँ. तो ये कुछ इस तरीके का बनता. और इधर वाला अगर आप notice करते हो तो ये क्या बनता, minus x cos x
राइट, वो जीरो हो जाता है दूसरा वाला, और ये क्या आ जाता है यहाँ पर, नोटिस करो कॉस टी का इंटीग्रल क्या होगा, साइन टी, और साइन टी को हमने पुट कर दिया साइन एक्स. सो दिस इज व्हाट you would have got in terms of fx, and now you could have gone forward and differentiate. But again, as you see, it's calculative, and I don't expect most of the people to solve this, but you guys can now go forward and solve this and find the value. Okay, so but having said that, I am still sticking with 24 marks. So just notice, despite being telling you all these steps, all the questions, I am just marking those questions which I think should have been solved. They should have been solved. Even if you know this question, and if you are confident you should do this, then you could mark for review. But if you do not know how to differentiate, or let's say do this, then you should forget about this question. Okay, the next problem is area. So let's see area. Sometimes area problems are easy. You just have to see that can you draw the diagram. If you can actually see the diagram bolna chahiye, ya if you can draw the graph actually, then the question is really simple. So if the area of the region bounded by y equal to x square, simple graph, y equal to 1 by x, again a standard graph, though we still have a doubt that you would be comfortable with this or not. And the lines y equal to 0, x equal to t, that is y equal to 0 is the x-axis and x equal to t is something like this. So let's see what will be the graph. Let's say this is the x-axis, so y equal to x square is something like this, y equal to 1 by x will be a graph something like this. Okay, and now you have to take t is greater than 1, right? It is also given that t is greater than 1, remember. And by orally seeing, you can see that if you put x equal to 1, both of them will meet at x equal to 1. So that means this point here is nothing but x equal to 1 here. So that means t is greater than 1. So somewhere down the line, let's say this is x equal to t. This is x equal to t, right? So what you have to do is find the area bounded. What is the region bounded by the two curves now? Okay, so but now here comes to read the question very very carefully. हमें एरिया बाउंडेड की बात करते हैं हमेशा, तो एरिया बाउंडेड में हमेशा एक कंसिडरेशन होती है, व्हाट आर द बाउंड्री पॉइंट्स. सो बाउंड्री पॉइंट्स इफ यू नोटिस आर गिवन बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 1 बाय x, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू t. चार बाउंड्री पॉइंट्स. So what will be the necessary area? Figure out the boundary. These are the boundaries. First curve, second curve, third curve, and the fourth curve. So this is the region which you guys would want to find the area for. Notice, can I say 28 marks now? Simple problem, really simple problem. Why simple? See, from 0 to 1, you are going to integrate x square dx. Then from 1 to t, you are just going to integrate 1 by x dx. And you know the area is already given to you as 1. So the area of this region, area, is already given 1 square units, right? Isn't it? Easy problem, right? You must have done really difficult problems in CBSE or your board, state level boards than this. So this becomes x cube by 3, 1 to 0. And this is nothing but ln modulus x. And you're going to put t in 1. This is 1. Now solving this further, this is nothing but what you will say, this is 1 by 3 plus ln t, let's say, because ln 1 will be 0 and this is equal to 1. So this comes out to be that ln t is equal to 2 by 3. This implies the value of t is nothing but e raised to power 2 by 3. This is the answer. Just see the options. Fourth option. That is why I was saying plus 28. As simple as that. Okay, now let's see and move forward and do the 77th. And we were expecting differential equation now. So let's see differential equation. It says differential equation representing the family of ellipse. Now, again, I have not seen many people being very comfortable with this family of type questions, right? Though they are standard questions which generally come even at board levels also. But let's see. Having foci either on x-axis. So it is saying the foci can be either on x-axis or on y-axis, right? I'm not sure. The center is at origin. What is fixed is center is at origin.
So if the center is at origin, that means we are sure that it will be x square plus y square, otherwise it will be x minus h plus y minus k. So why we are not sure what are the foci, that means we are not sure whether a is greater than b or a is less than b. Because if a is greater than b, then the foci are going to lie on x-axis. If it is smaller, then it is going to lie on y-axis. This is what we know. The other thing that is given to us in this question is that the curve also passes through 0, 3 point. That means 0, 3 is going to satisfy this particular curve. So if you put that value, it becomes 0 by a square plus 9 by b square equal to 1, which implies that b square is nothing but it is 9. So if you notice, what has happened here is it's simple actually, that there is only one parameter which is left, or you can say the arbitrary constant whose value you have to figure out. Why? Because if you notice this particular step here, what has happened or what has transpired here is you just have left a square ही बचा है अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए. So अगर a square बचा है, arbitrary constants कितने हो गए? So if you ask the number of arbitrary constant, right, arbitrary constants, so if you notice that is nothing but equal to 1. So if that is equal to 1, what will be the order of the differential equation? It cannot go by beyond dy by dx. So अगर जहाँ double derivative आ रहा है तो वो वाली options तो तुम्हारी वैसे ही गलत हो गई. So that means if I go back and see the answer options, गलत गलत. So या तो third option होगा या फिर fourth option होगा, which you guys can easily now solve actually. So now if you want to differentiate, how you can do is form something like this, 1 minus y. So there could be various ways by which you can do it. Since there is only 1 dy by dx that you have to do, I can also write this as 9 minus y square by, and I can take this 9 here, right? I'll take it here 9, and this will be x square. Now if I differentiate, this term will be a constant, right? This is a constant and this will be 0. So this will become what? It will be 1 by x raised to power 4, that is square, and what it will become? X square into minus 2y y1 minus this will be what? Now you will differentiate the denominator, that is 2x into 9 minus y square. This is equal to 0, right? And the whole thing will now be written as, since it is like this, and x raised to power 4 will be on that side. X can also be taken common. What you, and 2x, in fact, if you notice, what we will do is you can take 2x common here in this particular thing here. So what you will be left with is, if you notice, it is minus y x y dash, or in fact you can have take minus also common, but let's see. So 2x we have taken outside, so this will be 9 plus y square equal to 0. This is what the equation would look like. Okay, so you can now mark the answer easily that D is the answer option, which is actually matching with your answer. So I'm not sure how much of you would agree that this question was easy or tough. As per me, I would not in fact include this question in my mark list. Let's move forward. I just hope you understand how I have done this question. Okay, let's see the 78th question. It says the locus of point of intersection of lines, right? 78 थोड़ा सा difficult लग रहा है सुनते ही. Locus of point of intersection of lines, right? So I would not say that most of you would be comfortable by the way this equation is given, and if moreover you guys notice this is something in terms of k also. K भी एक parameter आ रहा है इस question में, right? So locus of point of intersection of these two lines हमें निकालना है locus of point of intersection, right? So जहां तक मुझे लगता है locus का नाम सुनते ही तो most of the students are not very comfortable, right? अगर comfortable नहीं है तो मेरा पहला टारगेट होगा कि यार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करा जाए, जबकि अगर तुम लोगों को सिर्फ समझना है तो मैं समझने के पर्पज से समझा देता हूँ. I would be leaving this question, right? If I were a student like you, I would have left this question. Again, I'm making the assumption that I am not very well prepared, right? Exceptionally well prepared in that way. I'll be leaving. And if you notice locus of point of intersection, इसमें parameter क्या आ रहा है आपका? The parameter is actually k. That means you have to eliminate k, right? That is the target that you should think of while solving a locus problem. Let's move to 79th now. And by the way, we still are at 28 marks. Okay, so let's do the carryover that we are still at what?
28, right? We still have to go a long way. And don't worry too much about questions. You are still at only 18th question, right? You still have 12 more questions to go. And now still there is a good chance that you can score really well. Let's see. If a circle C, now I'm moving to question number 78 or 79. So 79 says that if a circle whose radius is R touches externally भी दिया हुआ है और सर्कल क्या दिया हुआ है x square plus y square plus 2x minus 4y minus 4 equal to 0. तो अगर ये दिया हुआ इस सर्कल के बारे में we can find everything. The center of this circle then will become what? Minus 1 comma 2. What will be the radius? Radius will be nothing but 1 square plus 2 square plus 4, which is nothing but will come out to be under root 9, which is 3. So अगर ये दो circles हमें मिल गए हैं and it touches externally, so if the whose radius touches externally the circle at the point 2 comma 2, then the length of the intercept cut by the circle on x-axis. Okay, so this is the kind of diagram that you have, that the circle whose radius is 3 is touching. So let's say this is the 3 and this point here where they touch each other, let's say this point P which is given is 2 comma 2. ठीक है, और इस वाले का तो हमें सब कुछ पता ही है कि ये क्या है -1 comma 2. ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं होता है कि सर which direction have we taken in the wrong or right quadrant, it doesn't matter. And it is now also seen that the radius is also 3 of the other circle. So now you can easily say that if C is the center of the other circle, so then P is the midpoint, right? P is the midpoint. But having said that, this is question is not asking you to find the basically what the center, right? What it is asking, let's see, P is the midpoint, right? अगर P midpoint है तो 2 is equal to क्या हो जाएगा, -1 plus x by 2. So that implies x should have been 5, and I can similarly say 2 should be equal to what, 2 plus y by 2, right? So this will become what, y is equal to nothing but 2. So the center, the C which you are seeing here is nothing but, you can say 5 comma 2, right? That is the center. Now you know the center, you know the radius of the circle. Now what is asked is find the length of the intercept cut by the circle on x-axis. जो मैंने बना रखा है वो क्या है, नोटिस करो ये वाली चीज, right? Length of the intercept, that means intercept की length क्या हुई, ये अगर a था और ये b था, that is what you want to find, length of the intercept AB. So I'm not sure how many of you would find this easy, though for me I think this should have been solvable, because इसमें circle का कोई भी बहुत बड़ा logic use नहीं हो रहा. This will be the equation of the circle that you will get. For y x intercept, how do you find x intercept? For x intercept you have to put y equal to 0. Let's put y equal to 0 here. So this will be x minus 5 whole square. This will be, put y equal to 0, this will be 4 equal to 9. So x minus 5 whole square will be equal to 5. So this implies x minus 5 will be nothing but equal to plus minus root 5. And there will be two values of the intercept, that is 5 plus minus root 5, right? These will be the two particular answers. So if you wanted to find the length, we can now see 5 plus root 5 will be this point, and this A point will be 5 minus root 5. Okay, this is the stuff. And what will be the distance AB then? Distance AB will be nothing but their difference of the modulus. So that is 5 plus root 5 minus of 5 minus root 5, right? This will be the answer. And if you notice 5 and 5 get cancelled, you will get what? 2 root 5 as the answer, which is you will mark, which is the first option. But having said that, I still don't expect a lot of people to go forward which have very basic preparation जो ये लोग कर पाएंगे. तो इसीलिए फिर से अभी भी हम कितने स्कोर पे बैठे हैं अपने बरकरार, अभी भी मान के चल रहा हूँ हम 28 मार्क्स पे बैठे हैं, जबकि मैं तुम्हें बार बार दिखाता चल रहा हूँ कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं हैं. Okay, now let's see the 80th question in action. 80th is basically again a coordinate geometry problem. It says P be a point on parabola, right? X square equal to 4y. And as I read parabola, I know that there would be some people who are not very comfortable with parabola. If the distance of the point P from the center of the circle, so there is a circle as well, right? So the tension again rises because a lot of students have not done the combination of parabola and circle really well, despite the fact that it is asked
very very regularly. So the, P and the distance of the center is minimum, then you have to find the equation of tangent to the parabola at P. Though I know that it's a very, I should not say it's a very difficult question, it's a standard problem because it's a minimum distance between two curves problem, minimum distance between two curves, which is by the way a very standard protocol in JEE Mains. JEE Mains बार बार पूछता है आपसे, तो अगर मैं बात करता तो ये आना चाहिए था. दिस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये फंडा होता है. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज एक्चुअली अलोंग द common normal, but I am assuming that a lot of people would not be knowing this fact, so I am going to leave this question. I will not even mark this question for review. I am just going to leave the question because I have not done this kind of questions. Or even if I have done, I am not really good at these kind of questions. I'll leave this. Let's move forward. I'll do 81. I'll pick 81 now. 81 says at the length of the latest rectum of ellipse LR. Now ellipse, if I talk about ellipse, is one such topic which is asked, but only good point is only basics are asked. That is what I have been telling each and everyone. And if you notice from the past years, this is what happens. So if ellipse is there, my target would be to solve a ellipse question because it will be based on purely geometry. So LR of ellipse is nothing but 2b square by a, the basic formula, right? This distance is given to be 4, and the distance between a focus and the nearest vertex, right, on the major axis, distance between the focus and the nearest vertex. So अगर एक को A ले लेते हैं और एक था AE, right, ये मॉडुलस जो कि यही होगा डिस्टेंस इनका, is 3/2 units. This is what is given to you. You have to find the value of eccentricity. Eccentricity की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें एसेंट्रिसिटी वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ही सिर्फ लगाना होता है जो आपको पता होना चाहिए. दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसेंट्रिसिटी, that e square is equal to 1 minus b square by a square. This is the formula that you should know. And if you know this formula, let's see how I can utilize this here. This becomes b square by a is equal to 2, or I can say b square by a square is equal to 2 by a. Let's put the value back here. So this becomes e square is equal to 1 minus 2 by a. And you already know a relation that a minus ae is equal to 3/2. That is, a can be taken and 1 minus e will be equal to 3/2. So this is your first equation. This is your second equation. Just need to solve this. This is really, really simple. Now let's say 2 by a is 1 minus e square, or you can say a is equal to 2 upon 1 minus e square, right? This is what you can say. Right, so that means we are all done, in fact, if you notice. So that means just substitute the value of a from this here. So what you will do, 2 by 1 minus e square is into 1 minus e is equal to 3/2. And if you can see, 1 minus e will get cancelled. Now you are left with 1 upon 1 plus e is equal to 3/4. 1 plus e is equal to 4/3. So this implies e is nothing but 1/3, which is the final answer which you were expected to find. And I would say that I have now found my question of improving my score. Now I will say I will move to 32 marks. Because this is something which you should actually go forward with your JEE Mains, because understand the questions on the ellipse will be asked on basic of geometry, only basics, and mostly 90% of the times the questions are asked based on eccentricity. So you should just know the formula of eccentricity. Okay, next let's take the 82nd, and as we move to the 82, now the question of vector 3D comes, and I would always proclaim that you should be able to do vector 3D. If you're not able to solve vector 3D, that means you're not prepared well, and which is not good. Then you'll not be able to score marks. Let's see the question first of all. It says the sum of the intercepts of the coordinate axis of the plane passing through the point. तो plane का क्वेश्चन है जो कहाँ से पास कर रहा है, -2, -2, and containing the line joining point. So देखा जाए अगले भी दो क्या हैं, पॉइंट्स ही दे रखे हैं. तो एक तरीके से अगर आप नोटिस करो, आपको 3 points on a plane दे दिए. You are given 3 points on a plane and you have to find the equation of the plane and then the intercept. तो 3 points. So vector 3D में किस कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया आपके पास? बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया. 3 points on a plane are given. 3 points on a
plane are given to you and then you have to find out that where it is going to lie and everything. So अगर मैं यही प्लेन ले लेता हूँ जो हम 2D पे ले रहे हैं, आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे थे, ये जिसका नाम कर देते हैं ए, ये हो गया बी और ये ले लेते हैं सी, राइट, ए बी सी. So there could be various methods by which you would have been taught this, I don't know, but any method would work around. like एक तरीका ये है कि आप क्या करें, ए बी और ए सी निकाल लें और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें. Find the cross product of AB cross, let's say, AC, because this will give you what? Normal DRs. Normal DRs to the plane, right? This is what you can do. You can also apply the condition of coplanarity, whichever way you like, right? So नंबर चाहिए तो नंबर तो बन रहे हैं यहाँ पर. देखो अगर हम ए बी के डी आर्स निकालते हैं, व्हाट आर द डी आर्स ऑफ द ए बी? इट विल बी 1 माइनस ऑफ -2, देन -1 माइनस ऑफ -2, right? This is what you are going to do, and then it will be 2 minus 2. So DRs क्या बने यहाँ पर देखो, 3, 1, 0, right? This will be the DRs of the AB. और AC के DRs की अगर हम बात करते हैं तो AC के DRs क्या हो गए, फिर से देखो जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं. 3, this will be 3, -1. Now you want the DRs of the normal. This will be the cross product of these two, right? That is why it will be K cap 3, 1, 0. 3, 3, -1, right? This is what you will do. What is the answer that we are going to get of this? Let's just quickly calculate. This is minus I minus j. Let's see what would be the interior, and this would be -3 and plus k times k is 9 minus 3, which is 6. So if you notice, this becomes minus I cap plus 3j cap plus 6k cap, right? So इसमें क्या बन जाएगा ये, -1, 3, 6 are the DRs of the normal. Now you have the normal and you can pick any point. Let's say we again pick the point A. So क्या बन गया, x minus of -2, which is x plus 2 times -1 plus 3 times y plus 2 plus 6 times z minus 2 equal to 0. So this is how you write the equation of plane, right? Equation of plane कैसे लिखी है मैंने, a times x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1. I hope everybody knows this. ठीक है जी. चलिए, तो ये अगर हमें पता था तो अब तो आंसर आ गया. तो कितना बन गया, -x plus 3y plus 6z, and if you solve it, it will become -8. So now you just need to find out what x-intercept, y-intercept and z-intercept. This is the question for x-intercept. What you will do, you will put x and y both 0. So if I put x and y both 0, what you will get, this is answer is going to be -8. For y-intercept, what you guys are going to do, you are going to put x equal to 0, z equal to 0. So that will be what, 8/3. चलिए, और z इंटरसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो z इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, put x and y both 0, this will be 8/6. okay, so if you add all of them, so this adding up will become what, 8 by what, it will become 8 by, if you notice, it will become 8/2, which is 4, and if you add these two, your answer will come out to be -4, which is the B option. And hence I am going to add my score to 36 now, because I believe these kind of questions are very, very normal, which should be done. If you are not good at vector 3D, please make sure that you are really good at vector 3D, because 2 questions are asked every time. And this is, by the way, one of the standard problems that could have been asked. This is a standard problem, right? Clear? Let's move to the next problem then. Okay, let's see the 83 one. 83 one says that the angle between the lines x/2 equal to y/2 equal to z/1, and there are other line is 5 minus x/-2, 7y minus 14 by, now p is there, right, equal to z minus 3/4, right? इनका बीच का क्या दिया है, एंगल, और p की वैल्यू पूछिए. इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता. मस्ट टू डू. 32 नंबर हो गए थे, अब मेरा होना चाहिए टारगेट 36 मार्क्स. दिस शुड स्टार्ट गिविंग मी कॉन्फिडेंस बैक, बिकॉज अगेन दिस इज अ वेरी, वेरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. what is required now is simple, very, very simple element is required. क्या चाहिए आपको अब, DRs. DR इस वाले के तो हैं आपके पास 2, 2 और 1 परफेक्ट DRs. इस वाले को पहले अरेंज करना पड़ेगा. ये हुआ x minus 5/2.
7 कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा 7y माइनस 2/p/7 और ये क्या हो गया z माइनस 3/4. So the DRs of this particular line can be written as p/7 and 4 here like this. Okay, and you can multiply the DRs by 7 also, that is not a problem. अगर करना चाहते थे तो ये p और ये कितना हो जाता 28, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते थे. सो अगर ये दो DRs थे और उन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है आपको तो cos थीटा कितना हो जाता, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विच विल बी 28 प्लस 2p प्लस 28 divided by under root, what you will do, 2 square plus 2 square plus 1 into 14 square plus p square plus 28 square. यही होगा एवरीबडी. और ये देखा जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा cos inverse 2/3, राइट, विच इज नथिंग बट दिस विल लीड टू 2/3. तो अगर आप नोटिस करो ये सारा क्या बन गया p प्लस 28 बिकॉज 2p प्लस 2 टाइम्स 28 को कैंसिल हुआ, ये 3 और 3 यहाँ कैंसिल हुए, 2 कैंसिल हुआ और ये सारा का सारा ऊपर भेज देते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करके. Okay, so this will be nothing but p square plus 890 and definitely now the next target is nothing but you will square, right? So देखा जाए तो 28 स्क्वायर वैसे हमें करना था तो कैंसिल कर सकते थे. देखो अब इसमें आप समय बचा सकते थे. ये मैं यहाँ सॉल्व करा, इससे बेटर क्या था, इसको सॉल्व नहीं करते हम लोग. वाई? बिकॉज आई नो 28 स्क्वायर वैसे भी मैं करने वाला हूँ. कहाँ पर? इधर. So this 28 square that was going to happen is actually going to get cancelled out. Isn't it good? So ये क्या बना p square plus 28 square plus 196. This 28 square get cancelled out, p square gets cancelled out. You're left with p is equal to 196 by actually 56. This is what you're left out with. So if you do, this is nothing but 14. This will be what? 4 and 49. If you see, this is nothing but 7/2. So the value of p which we were supposed to find for this answer, we have got it is 7/2, and this is how we are going to fetch our another 4 marks. Right, so now we forward and move to 40 marks. So we have now, if you notice, we have already make our mark, that is we have already got 40 marks in this particular question paper despite solving very less. Okay, and we still have 7 questions still to go which we have not even seen. Let's move forward quickly and see them. Okay, next is vectors. Vectors generally I believe is a topic which you should be able to do in the exam. पर कई बार क्वेश्चन अटक जाए तो क्वेश्चन के लेवल पे डिसाइड करेंगे कि दैट वी शुड अटेम्प्ट इट और नॉट, राइट. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ए और सी ऐसे वेक्टर्स हैं. बी इज अ वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर and a dot b is given to be 3. Then you are asked to find what is the value of modulus b function. So for me it looks like a bit difficult problem that I would not be able to think of how the first step has to be written. But if let's say I am going to leave this question, right, I'm going to leave this question, but I will go forward and teach you that how you could have thought of this. What is the hint? So the hint lies here that a cross b and a dot b. So cross gives you sign between a and b and dot will give you cos, right? You want the modulus. Now sine and theta are there. You should think of sine square theta plus cos square theta is equal to 1. This is the hint. So how you could have thought over this particular question is a cross b is equal to c. So then their modulus will be also equal. This will be mod a mod b sine theta will be equal to modulus c, right? And there it will be mod a mod b cos theta is equal to 3. This is already given from this particular equation here. So mod a is nothing but root 3, which we have got. B sin theta modulus c is root 2, right? This is what we have got. So sin theta is nothing but you can say is root 2 by root 3 by modulus b, right? This is what it becomes. And cos theta here is nothing but 3 by root 3 modulus b. Now you just have to square and add to find the value of modulus b. So this becomes what? 2 by 3 modulus b square plus ये क्या हो जाएगा, देखो ये अगर हम नोटिस करते हैं तो यहाँ रूट 3 हो रहा था तो यहाँ पर कितना हो गया, ये सिर्फ 3 आ जाएगा, राइट? इसका स्क्वायर करोगे तो. So 3 by modulus b square should be equal to 1. So modulus b square, if you take out common, will be 2 by 3
plus 3, which is nothing but 11 by 3. And answer would not be 11 by 3. We are asked about modulus. So this will be under root 11 by 3. That is the third option, which is matches. Right? This is the answer. Okay, but I would still say this is a difficult question which we have left out. We still are sitting at the 40 marks criteria. All right, let's see the next question. It comes from straight from your chapter statistics, and I would still say that statistics is again a scoring opportunity because there is no big changes in the pattern कि बहुत सारे मल्टीपल तरीके से नहीं पूछा, स्टैंडर्ड अप्रोच होती है. ठीक है, तो मेरे लिए अभी जो मुझे लगता है that is a scoring opportunity. How? Let's see. It is given that the mean and the standard deviation. So mean and standard deviation. तो mean आपको दे रखा है of 5 observations is 9 and SD is equal to 0. So now this is something very important. SD is equal to 0. इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ. डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0. डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0. ये कब होता है? जब नंबर्स व्हेन नंबर इज इक्वल टू मीन. दैट इम्प्लाइज ऑल नंबर्स आर 9. ऑल नंबर्स आर एक्चुअली 9. वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो एक तो सीधा सा ये फंडा पता चल गया कि सारे जो इनिशियल नंबर्स थे, तो 5 numbers that are taken are actually 999. These are the 5 numbers which were originally taken. Now if one of the observation is changed, so let's say there are now 4 9s, okay, and there is a A here now. Now what will be the sum? 36 plus A by 5 will be the new mean, right? This is the new mean, and notice new mean is also given. New mean is given to be 10. Right, so that means the value of A is nothing but 14. So one of the values out of 9 has been changed to become 14. Now you are asked to find the standard deviation. What is standard deviation? That is under root of the variance. Variance is nothing but summation what? Xi minus x bar square by n. Right, this is what you will do with the formula. राइट, तो ये क्या बन गया आपका क्वेश्चन. देखो अब एक्स आई मतलब क्या हुआ? हर इंडिविजुअल वैल्यू का 9, और अब की बार मीन क्या आया आपका? मीन तो आपको दे रखा था 10, राइट? 10 मीन दिया हुआ था, और ये 4 नंबर ऐसे थे जो 9 थे, और एक नंबर क्या था? 14 माइनस 10 whole square. And how many observations are there? There are still the same 5 observations which are there. Simple scoring opportunity which you should have grabbed for this particular question. तो ये क्या हुआ? 4 plus ये कितना हुआ? 4 square, that is 16 by 5. If you notice, this comes out to be 2 only. So the correct answer for this particular question is the third option which you should have marked. And by this I now move on to my 44 marks. Right, I should have attempted this in the examination, standard problem. I moved to 44 marks. Okay, the next question let's see is 86, which is talking a lot about probability. ठीक है, प्रोबेबिलिटी में वैसे ही थोड़ा हाथ तंग होता है बहुत सारे बच्चों का. तो जरा देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रीड करने से सिंपल लगता है, आसान लगता है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में. ए बी सी आर 3 इवेंट्स विच पेयर वाइज इंडिपेंडेंट एंड ई इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए बी सी. और बहुत कुछ ऊट पटांग सा पूछा जा रहा है यहाँ पर, जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करता है एक्चुअल में, बिकॉज दिस इज समथिंग दिस, राइट? ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एक्चुअल में. तो और साथ में क्या दे रखा है हमें, अगर नोटिस करो कि यार ये वैल्यू तो 0 है. ठीक है, तो थोड़ा अगर मुझे टाइम के कंस्ट्रेंट के हिसाब से देखना था, आई वुड रादर से यार मुझे इस क्वेश्चन को लीव कर देना चाहिए. आई विल लीव फॉर नाउ. Right, and if you are not very confident of independent and mutually exclusive and conditional probability, you should not even mark it for review. So I would save my time and review it later, or maybe completely leave this question. ठीक है जी, तो वो छोड़ के मैं आगे के क्वेश्चन में बढ़ा. तो 87th नोटिस करो, फिर से कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी वाला ही लग रहा है. क्या कहता है वो? 2 different families, there are 2 different families, A और B 2 different families हैं, are blessed with equal number of children. ठीक है, equal children, equal number of children are there in the family. ठीक है, दोनों में बच्चों की जो तादाद है वो बराबर है. There are 3 tickets to be distributed among distributed. एक ये वर्ड हमें परेशान करना शुरू कर रहा है अब. Distributed among the children of these families so that no child gets more than 1 ticket. कोई भी बच्चे को एक टिकट से ज्यादा नहीं मिलती है. If the probability that all the tickets go to the children of family B, कि 3 टिकट्स थी हमारे पास. ठीक है जी, 3 टिकट्स थी, तीनों की तीनों टिकट्स आपने B को दे दी, वो है 1/12 ये प्रोबेबिलिटी.
right? Then the number of children in each family, number of children. Okay, so I would rather say that this is still a difficult question. I don't expect a lot of you people would be really comfortable with the PNC and probability, unless until a very straightforward question. As it's not a very straightforward question. So if I have to teach you, let's say this is the number of children B equal to P. So that means total children. So that means total children will be nothing but equal to 2p, right? That is what we can say. And if you have to give 3 tickets to any of the members of B family, is will be PC3. And how many in total way this could have been done, because there were total of 2p children, so 2p C3 would have been the total count. Actually this question was this simple. अगर आप इतना ही सॉल्व कर लेते तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाता और ये आपको आगे सॉल्व करना था, तो इससे जो भी पी का आंसर आता वो आपका फाइनल आंसर होता. बट सिंस आई अंडरस्टैंड दैट कई बारी हमें क्लिक नहीं करता है, ट्रिकी होते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड, सो वी आर लीविंग दिस कि हमसे तो नहीं होगा भाई. चलिए 88 क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग. Let's mark the 88th. Can we do it or not? We are already sitting at 44. If an angle A of a triangle ABC satisfies, चलिए क्या दिया हुआ है, 5 cos A plus 3 is equal to 0, then the roots of the quadratic 9x square plus 27x equal to 0 are, right? रूट्स बताने हैं इसके, किसके टर्म्स में बताने हैं, नोटिस करो, कॉस के टर्म्स में या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में. अगर मैं यहां से नोटिस करता हूं तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, -3/5. एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं. इस वाली क्वाड्रेटिक को हम लोग, ये क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या आएंगे, क्वाड्रेटिक रूट्स, लेट्स सी. सो देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ रूट्स निकालने हैं. रूट्स निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की जरूर पड़ती है, दैट इज b² - 4ac. तो अगर उतनी मेहनत कर लेते तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत आसान है. देखें कैसे, 9 और ये हो गया 20. ठीक है जी, यही कुछ बनेगा इसमें मामला. तो अगर आप नोटिस करो तो 27 स्क्वायर जल्दी से निकाल लेते हैं एक बार हम लोग. और 27 स्क्वायर निकालने का आसान तरीका है वैसे, कि आपको पता है 27 क्या होता है, 3³ दिस, और ये क्या हो गया 3⁻6. वो हमें ज़्यादा अच्छा याद होता है कि वो क्या होता है 729. इस तरीके से कर सकते थे. तो ये 729, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 36 × 20, दैट इज 720, राइट. सो इसमें डी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 9. ठीक है. सो चलिए रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो रूट्स क्या हो जाते हैं. now तो you can see that this question is really a lollipop question. Why? Because the roots of this quadratic equation will be -b plus minus root d by 2a, right? So -b कितना हुआ, -27 plus minus root d is 3/2 by 9, राइट. यही बनेगा. तो इसके जो दो आंसर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आंसर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है -30/2 × 9, एंड एक क्या आ रहा है आपका आंसर, -24/2 × 9, राइट. यही दो आंसर्स बन रहे हैं. ठीक है. अगर हम इन दोनों आंसर्स को नोटिस करें क्या क्या बनते हैं, देखें. So the two roots, actually let me just make the space from the above. So two roots that you are getting are very simple. तो दो roots की वैल्यू क्या है आपके, एक आ रहा है x1 आ रहा है क्या, -5/3, और एक x2 ले लेते हैं, वो आ रहा है -4/3, राइट. ये आ रहा है. अच्छा, अगर आप नोटिस करो तो एक रूट आपको दे रखा था cos a की वैल्यू क्या दे रखी थी, -3/5. तो ये तो अगर x1 की बात करो तो ये क्या हो गया, 1/cos a नहीं हो गया. तो दैट मीन्स एक रूट तो आपका पक्का हो गया, निश्चित हो गया. क्या आएगा आंसर, एक तो सीकेंट ए हो गया आंसर. एवरीबडी एग्रीज टू इट. चलो अब जल्दी से देखो अगला. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था देखा जाए तो यार. ये क्या हो गया, 4/3, -4/3 आ रहा है. ठीक है. और हमें कॉस दिया हुआ था, कॉस कितना दिया हुआ था हमें, ये थीटा ले लेते हैं. तो ये 3 और ये 5, और ये माइनस का मतलब क्या होता है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है. माइनस का तो मतलब यही होता है. तो ये हो गया 4. तो 4 अगर कॉस ये था तो हमें क्या चाहिए, 4/3. तो अगर 4/3 बात करते तो कितना आ रहा था, देखो tan थीटा. तो देखा जाए सिंस ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए tan भी क्या होगा, नेगेटिव, तो -4/3. तो दूसरा आंसर क्या आना था आपका, एक अगर सीकेंट आया है तो दूसरा आंसर क्या आएगा आपका, tan a. तो ये दो आंसर्स हैं, दो रूट्स हैं जो आपके इस इक्वेशन के आएंगे और मार्क करने थे हमें, विच इज दिस. सो देखा जाए बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था.
कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ पूछी नहीं थी, तो इसलिए आई वुड एक्सपेक्ट कि ये आपको पेपर में बनाना चाहिए था क्वेश्चन। 48 मार्क्स सिक्योर करने लायक क्वेश्चन था ये, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ओके, लेट्स सी दी 89th क्वेश्चन। सो 89th देखते ही पता चल रहा है कि यार वर्टिकल टॉवर आ गया, तो हाइट एंड डिस्टेंस इज प्रॉब्लम, राइट। एंड हाइट एंड डिस्टेंस अगेन इज वन ऑफ द दोस टॉपिक्स जो आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इन द एग्जाम। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टॉवर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड टुवर्ड्स द टॉवर। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक टॉवर है, एक कार है, वो कहीं ना कहीं टॉवर की तरफ आ रही है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बनेगा। ठीक है, तो चलिए टुवर्ड्स द टॉवर ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, मान लेते हैं कार यहाँ पर से आ रही है, कहीं टॉवर की तरफ आ रही है, और यहाँ पर आप बैठे इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। इट टेक्स 18 मिनट्स फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार टू चेंज फ्रॉम 30 टू 45। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है कि एंगल पहले ये 30 था तो ये 30 था, और अभी ये क्या हो गया यहाँ पर 45। सो कार इस पोजीशन से कार यहाँ तक आ गई, इसमें इसको कितना टाइम लग रहा है, इट इज गोइंग टू टेक हिम 18 मिनट्स। यहाँ तक करने में 18 मिनट लगते हैं। देन द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच इवेंचुअली द फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ पर पहुंचने में कार को x मिनट्स लगेंगे, वो हमें पता लगाना है कि x की वैल्यू क्या है। सिंपल प्रॉब्लम। एंड इफ आप लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है हाइट एंड डिस्टेंसेस पे, तो प्लीज़ उसे देख लें। वहाँ मैंने ट्रिक बताया है कि अगर ये डिस्टेंस x होता है तो ये डिस्टेंस √3 माइनस एक्स हो जाता है। वेरी वेरी सिंपली डन, ठीक है। 15 डिग्री के गैप पे जब ये होता है, तो अगर हम देखें कि कार जो है यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि स्पीड सेम है, कोई ऐसा नहीं बोला कि एसेलरेट डी एसेलरेट हो रही है, तो दैट मीन वो √3 - 1 डिस्टेंस जो है वो कितने में ट्रेवल करती है, 18 मिनट्स में। ठीक है, तो वो 1 यूनिट डिस्टेंस कितने में ट्रेवल करेगी, 18/√3 - 1, राइट। और कितना डिस्टेंस रिमेनिंग है अभी उसके पास, बता सकते हो, बल्कि x और ले लो, तो यहाँ तो x था, तो 1 यूनिट डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है इसमें। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस की बात हो गई। और अगर हम नोटिस करें तो इसका मतलब x यूनिट्स कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाइड दिस पर्टिकुलर वैल्यू बाय x। तो नोटिस करो, इसको मल्टीप्लाई बाय x करने के बाद जब करोगे तो इवेंचुअली सिर्फ यही बच जाएगा, √3 - 1। सो √3 - 1 करते ही ये क्या हो जाएगा, 2, और √3 ऐसे कर देते हैं, तो आंसर क्या आ गया, सिंपली 9√3 + 1। क्वेश्चन ओवर, क्वेश्चन ओवर हो चुका है यार। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं बन सकता टू सिक्योर 4 मार्क्स। 4 मार्क्स पूरे के पूरे बनते हैं अपने यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो हम 52 मार्क्स पहुँचे, 50 मार्क्स से ऊपर पहुँचे, बहुत ही मिनिमम बेयर मिनिमम क्वेश्चन करे हुए, बहुत टफ क्वेश्चन को छोड़ते हुए हम काफ़ी कुछ स्कोर बना के ले गए। ठीक है जी, क्लियर। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। तो लास्ट क्वेश्चन है 90th, जो कि फिर से क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और जो कि वो तो बिल्कुल ही आसान होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको ना सिर्फ ट्रुथ टेबल पे बनाना होता है हमें, तो वो हमारे लिए आसान क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे, ये क्या है, इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये इज फॉल्स ये बोला गया है, देन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले क्या करो, इसकी ट्रुथ टेबल बना लो। ठीक है, तो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यार ये आप करके जाएंगे। सो जैसे P और Q से स्टार्ट करते हैं, तो इन लोगों की ट्रुथ टेबल कैसे बनती है भाई, T T F F एंड दिस विल बी T F T F। नाउ नगेशन P और नगेशन Q जैसा जैसा दिया हुआ है ना, ज़्यादा बॉन्ड भी नहीं बनते, कई बार बॉन्डगिरी के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, मैंने नोटिस करा है। तो जब आपको क्वेश्चन आता हो, मेरा सजेशन ये है टू एवरीवन दैट यू शुड बी रियली पेशेंट, और उसमें स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए रादर देन गलत करने की जगह। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नगेशन P और नगेशन Q का डिसजंक्शन। ठीक है, तो मतलब और निकालना है। ठीक है, और का क्या मतलब होता है, एनी वन ऑफ देम इज ट्रू, सो दिस विल बी ट्रू। सो इसमें नोटिस करो, फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू अगर एक भी जगह ट्रू है ट्रू, और ये भी एक भी जगह है ट्रू। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगला जो साइन था वो था P इम्प्लीकेशन दिस वैल्यू। सो अगर तुम यहां पर नोटिस करो तो P की एक अलग से टेबल, और इस इम्प्लीकेशन साइन के लिए तुम एक अलग टेबल बना सकते थे। P का तो तुम्हारे पास ये था T T F F, और यहां से भी आपने क्या निकाला, F T T और T। ठीक है, ये निकाला आपने। सो जो इम्प्लीकेशन का साइन होता है, दैट इज P इम्प्लाइज जो हम Q करते हैं,
दिस इज ओनली फॉल्स, दिस इज ओनली फॉल्स. कब फॉल्स होता है ये? व्हेन p इज एक्चुअली ट्रू एंड q बिकम्स फॉल्स. दिस इज द ओनली केस वेयर दिस विल रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू. सो इफ आई गो बाय दैट लॉजिक, अगर मेरे को इसकी इंप्लीकेशन निकालनी थी, इंप्लीकेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो इस वाले ब्लॉक में द फर्स्ट ब्लॉक लेफ्ट इज ट्रू, राइट इज फॉल्स. सो यहां से ये वाली वैल्यू क्या आने वाली है? फॉल्स. और सारी की सारी वैल्यूज क्या हो गई? ट्रू. सो आपको बोला था इस क्वेश्चन में दैट द वैल्यू ऑफ द इंप्लीकेशन इज फॉल्स विच इज हैपनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच, राइट? इसके लिए हो रही है. और आपसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू पूछी जा रही थी? टी और क्यू की. सो इसका मतलब ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है. फर्स्ट रो में देखो क्या हो रहा था? P और Q में both were actually true, so that means fourth is the answer. Both were actually true and hence I conclude कि यार ये वाला भी मेरा तो marks बनने ही चाहिए थे 100%. So if you notice, I end up my calculation with 56 marks where I have left I don't know how many questions. और अगर notice करो, मैंने बहुत ही basic लेवल पे बात करें कि यार अगर मुझे बिल्कुल ही बेसिक आता है ना, तब भी मैं कितना स्कोर करता हूं. मैंने सारे के सारे टफ क्वेश्चंस छोड़ दिए. इफ यू नोटिस, all the tough questions I have left and still I have made sure that I get my 56 marks in this exam. So now you guys should be really confident और इधर उधर की बात ना करते हुए अपनी सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए और कॉन्फिडेंस पढ़ाई में बिल्डअप करना चाहिए. Alright guys, so if you just quickly notice, we just made 56 marks. That is, we just did 14 questions. And I am damn sure that you would have now realized, सर 14 तो हो गए मजे से. आपको ये रियलाइजेशन भी जरूर हुआ होगा कि सर इसमें आई कुड हैव एडेड मोर, इसमें तो आई कैड ऐड मोर, राइट? 14 क्वेश्चन करने के बाद सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3-4 क्वेश्चंस तो अभी भी ऐड और कर सकता था. 3-4 क्वेश्चंस कुड बी एडेड, राइट? यू कैन स्टिल से कुड बी एडेड. सो आप जस्ट नोटिस करो, ये 2-3-14 क्वेश्चन के बाद अगर जितना भी आप इसमें ऐड करोगे, that 3 and 4, it is drastically going to improve your score. Let's say इसमें अगर देखो 4 नंबर ऐड हो रहे हैं, 60 मार्क्स, 8 मार्क्स यू आर गेटिंग 64. और अगर आप एक 3 क्वेश्चन और सही कर ले तो 68. यू कैन सी द डिफरेंस योरसेल्फ. और सबसे कमाल की बात, बहुत कम पढ़े, या फिर हम पढ़ा तो नहीं कहना चाहिए, बट विदाउट दैट मच प्रेशर यू कैन स्टिल मेक श्योर कि भैया कितने नंबर बन रहे हैं? 56 तो बन ही रहे हैं. आई हैव टेकन इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स दैट केम फॉर 2018. ऑफलाइन जनरली आसान होता है, मैंने इसलिए क्या लिया, ऑनलाइन लिया, रियलाइज कराने के लिए कि ऑनलाइन पेपर में भी आसान तरीके से नंबर बनाए जा सकते हैं. पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. सो द इंपॉर्टेंट क्विक रिकॉल इज डू नॉट पैनिक, नो नीड टू पैनिक, राइट? सो पैनिक जितना करोगे उतना कम नंबर बनेंगे. उल्लू बनाने वाले बहुत हैं, उल्लू मत बनो. डू नॉट पैनिक. डू सेल्फ स्टडी, डू सेल्फ स्टडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा वीडियोस पे कॉन्सेंट्रेट मत करो अब इसके समय पे, सेल्फ स्टडी करो. द पेपर वॉज टू मेक यू रियलाइज कि दैट सिंपल स्ट्रैटेजी से स्कोर बन जाता है. सिंपल स्ट्रैटेजी से स्कोर बनता है. बहुत ज़्यादा बड़ी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज अ सिंपल स्ट्रैटेजी बाय विच यू कैन स्कोर रियली रियली गुड मार्क्स, राइट? एंड डू रिविजन, डू नॉट पैनिक, डू सेल्फ स्टडी, डू रिविजन. वीडियोस गई भाड़ में. मेरा ये बहुत बहुत आपसे निवेदन है कि सब लोग अपना टाइम इन 3 चीज़ों के लिए पूरा पूरा बचा के रखें. स्कोर ज़रूर बनेगा. आई होप दिस वीडियो वॉज एज प्रोडक्टिव as the earlier ones. For in the description box you can actually go forward and see a lot of related videos which you will find very very helpful, very very helpful. ठीक है? In the end I would just say God bless you all, right? I just hope all of you get a very very good rank, and in fact I have always said that you should get your deserved rank, right? Deserving बनो, rank वैंक छोड़ो, you should get your deserved rank, right? Deserved होना चाहिए वो चीज. God bless. And you just make sure that you keep studying with a very very positive and a very good smile on your face. I, Anup Sir and MathonGo team are completely with you whenever you require. God bless. Good night.